Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So from the book Periwinkle, a book of science and technology by Coral Publisher, we are doing now chapter number 3, and the chapter number 3 is heat and temperature. So learning outcomes, after learning this chapter, students will be able to differentiate between hot and cold, differentiate between different types of thermometers, and describe the different methods of transfer of heat, explain the working of a thermos flask, and differentiate between different scales of temperature. So now the first one is hot and cold. The energy which is transferred from one body to another due to a difference in temperature between them is called heat. So जो एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है एक बॉडी से दूसरी में, किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. ओके, सो जो उन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है उसकी वजह से जो एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है उसे कहते हैं हम हीट. द स्किन इज़ वन ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस फील द सेंसेशन ऑफ हीट. राइट, कोल्ड, पेन एंड टच, जो हमारी सेंसेस हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम सेंसेशंस को पहचान पाएँ, हीट की हो, पेन की हो, कोल्ड की हो या फिर टच की हो. इफ़ यू डिप योर फिंगर इन अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर यू फील हॉट, राइट, बट इफ़ यू होल्ड एन आइस क्यूब इन योर हैंड यू फील वेरी कोल्ड. सो डू यू नो वाई दिस हैपन्स? ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ हीट. ऐसा हीट के फ्लो की वजह से होता है बच्चों. व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, इट फील्स वार्म बिकॉज द हीट एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स फ्लोज इनटू योर हैंड. ओके, सो जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो ये हमें गर्म लगती है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारे हाथ में है उसमें से फ्लो कर रही है क्या? हीट एनर्जी. सिमिलरली व्हेन यू टच अ कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक एन आइस क्यूब, जब हम एक आइस क्यूब को होल्ड करते हैं इट फील्स कोल्ड बिकॉज द हीट एनर्जी फ्रॉम योर हैंड फ्लोज इनटू इट. तो हमें ये ठंडी लगती है क्योंकि जो हमारे हाथों की हीट एनर्जी है वो इसमें फ्लो करती है. सो वी कैन से दैट इट इज़ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी विच मेक्स अस फील हॉट एंड कोल्ड. सो heat always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature, irrespective of the quantity of heat contained in the bodies. So heat हमेशा higher temperature वाली body से low temperature वाली body की तरफ flow करती है. So हम इसे कह सकते हैं कि जैसे bodies में heat contain होती है उसी हिसाब से उसका flow होता है. Hence it is the temperature which determines the direction of flow of heat. और heat के flow को कौन निश्चित करता है? Temperature निश्चित करता है. It is usually hot in summer, summers में hot होता है, and cool in winter. We wear cotton clothes in summer because these clothes keep our body cool. Similarly, we wear woolen clothes in winter. They keep our body warm in winter. Heat is a form of energy which makes an object to feel hot and cold. Heat transfers from a hot body to a cold body. Like I told you कि flow करती है higher temperature से lower temperature वाली body की तरफ. Temperature. Now what is temperature? We can get the idea of temperature of an object just by touching it. हम सिर्फ छू के उसके temperature का idea लगा लेते हैं. If the object feels hot, अगर object को हमें गर्म फील होता है, इट्स टेम्परेचर इज़ हायर देन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है. इफ़ द ऑब्जेक्ट फील्स कोल्ड, अगर हमें वो ठंडा फील होता है, सो इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर, उसका टेम्परेचर कम है देन आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से. राइट, नाउ टेम्परेचर इज़ जनरली द मेजर ऑफ हाउ हॉट अ बॉडी और सब्सटेंस इज़. सो टेम्परेचर एक वो मेजर करता है कि जो बॉडी है वो या सब्सटेंस है वो कितना हॉट है. सो इन अदर वर्ड्स टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. किससे मेजर करते हैं हम इसे? थर्मोमीटर से. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर.
The SI unit of temperature is Kelvin scale denoted by the letter K. Okay, so the other common unit of temperature are Celsius scale and Fahrenheit scale. Now Celsius scale, the temperature on the Celsius scale, जो Celsius scales पर temperature होता है, is measured in degree Celsius. उसको हम किस में measure करते हैं? डिग्री सेल्सियस में. It is written as %C. Okay, according to Celsius scale, the temperature difference between the reference temperatures of the freezing point 0% and boiling point 100% of water is divided into 100 equal parts called degrees. Okay, so ये कितने equal parts में बांटा जाता है? 100 equal parts में, जिसे हम degrees कहते हैं. Because it is divided into 100 degrees, so it is also called centigrade scale. तो इसे हम क्या कहते हैं? Centigrade scale. Now, Fahrenheit scale क्या होता है? It was invented by the German physicist Daniel Gabriel Fahrenheit. The temperature on the Fahrenheit scale is measured in degree Fahrenheit. It is written as %F. Okay. So Fahrenheit scale is a scale based on 32% Fahrenheit for the freezing point of water and 212% Fahrenheit for the boiling point of water. The interval between the two being divided into 180 parts called Fahrenheit. तो जो इनका इंटरवल है वो डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में? 180 पार्ट्स में, जिन्हें हम Fahrenheit कहते हैं. Now Kelvin scale. It was invented by the British mathematician and physicist William Thomas Kelvin. On the Kelvin scale, the melting point of ice is taken as 273 and boiling point as 373. The scale is divided into 100 equal parts because 100 का difference है. Each part is 1 K. When writing temperatures in the Kelvin scale, it is convention to omit the degree symbol and merely use the letter K. Okay, so these are the temperature scales: Kelvin, Celsius and Fahrenheit. Okay, absolute zero, freezing point of water, human body temperature and boiling point of water. Now, conversion of Celsius and Fahrenheit scale. We can convert, कैसे convert करते हैं हम Celsius और Fahrenheit scale को? We can convert Celsius into Fahrenheit. हम Celsius को Fahrenheit में बदल सकते हैं and Fahrenheit into Celsius with the help of a simple formula. एक formula लगाते हैं और हम इन्हें change कर सकते हैं. The conversion formula for a temperature that is expressed on the Celsius %C scale to its Fahrenheit representation is F is equal 9/5 centigrade plus 32. Okay, so the conversion formula used to convert a temperature from its representation on the Fahrenheit scale to the Celsius value is Celsius is equal 5/9 Fahrenheit minus 32. Okay, so the Celsius scale is in general use wherever metric units have become accepted and it is used in scientific work everywhere. So Celsius scale जो है वो general use में है, जहाँ पर भी metric units को accept किया गया है और ये use होती हैं scientific work में everywhere. The Celsius scale is named for the Swedish astronomer Anders Celsius who established the scale in 1742. Now let us take a few examples to understand the conversion in a better way. So बच्चों, these are the example, you can read it and you can understand it और आप इसकी practice भी करके ज़रूर देखें. So now thermometers. A thermometer is a device, ये एक device है which is used to measure the temperature of an object. जो एक object का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है कि जो सब्सटेंस है वो हीटिंग में एक्सपैंड हो जाता है और कूलिंग के टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. A thermometer has two important elements, the temperature sensor. For example, the bulb on a mercury thermometer
in which some physical change occurs with temperature and some means of converting this physical change into a numerical value. Okay, so जो बल्ब होता है on a mercury thermometer पर, ये in which some physical change occurs, उसमें कुछ physical changes होते हैं टेम्परेचर के साथ साथ, और some means of converting this physical change into a numerical value. Many devices uses a thermometer. The thermometer in the oven lets it keep a set temperature. Okay, so जो thermometer oven में होता है वो उसके temperature को set करता है. The thermometer in the refrigerator lets it keep a set temperature. The fever thermometer in the medicine cabinet measures temperature accurately over a very small range. Now mercury thermometer. The mercury thermometer consists of a fine capillary tube. एक fine capillary tube होती है made of glass with a small bulb at its one end. Okay? उसके एक end पर एक छोटा सा bulb होता है. The bulb and a small part of the capillary tube is filled with mercury. ये mercury से भरी हुई होती है जिसे हम पारा भी कहते हैं, right? A shining substance. The position of mercury level on the scale can be seen easily. The other end of the tube is sealed after removing the air from it. The capillary tube is enclosed in a thick glass tube called stem. The whole length of the tube is graduated in degree Celsius to read the temperature. So जो पूरी लेंथ है उस ट्यूब की वो ग्रेजुएट की जाती है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को पढ़ने के लिए. The mercury thermometer is also known as glass bulb type thermometer. All bulb thermometers use a fairly large bulb and a narrow tube to accentuate the change in volume. Now, like this, आपने देखा होगा, आप सबके घर में होंगे ये thermometers, okay, जिससे कि आप अपना फीवर को मेजर करते हैं कि कितना टेम्परेचर है. Mercury is a metal which is in liquid form. It is a good conductor of heat. That is why used in thermometer. It does not wet the glass tube of the thermometer. It is poisonous in nature. So, there are the thermometers in which alcohol is used instead of mercury. So, mercury की जगह पर alcohol use किया जाए, ऐसे भी thermometers होते हैं. Alcohol is less harmful than mercury. It freezes at minus 115 degrees centigrade, so it can measure much lower temperature than mercury. Now digital thermometer. It is now common to measure temperature with electronics. The most common sensor is a thermoresistor or thermistor. Okay, so जो most common sensor है वो है thermoresistor या फिर thermistor कहेंगे इसे. This device changes its resistance with changes in temperature. ये अपनी resistance को change करती है temperature के change के साथ साथ. A computer or other circuit measures the resistance and converts it to a temperature, either to display it or to make decisions about turning something on or off. This is type the digital thermometer. Okay. Now clinical thermometer. A clinical thermometer is used to measure the human body temperature. The normal body temperature of a healthy person is 37 degrees centigrade or 98.4 Fahrenheit or 36.9 degrees centigrade or 98.6 degree Fahrenheit. So, the clinical thermometer can measure only a short range of temperature from 35 degrees centigrade to 42 degrees centigrade. It is because the temperature of the human body does not vary beyond these limits. Okay? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का इन लिमिट्स से ज़्यादा बियॉन्ड नहीं होता. There is a constriction in the glass tube of the clinical thermometer. The constriction does not let the mercury drop back into the bulb. तो इसमें एक constriction होता है जो मरकरी को बल्ब में नहीं जाने देता. So we can read the temperature without being in a hurry. Before using a thermometer, wipe it with an antiseptic solution using a cotton swab. हमें जब भी हम थर्मामीटर को यूज़ करें उसे कॉटन स्वैब से
एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ साफ करें पहले तो। गिव अ फर्म जर्क टू लोअर मर्करी लेवल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से ये हम जर्क दें ताकि वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए। प्लेस द थर्मोमीटर बिलो द टंग फॉर अबाउट 2 मिनट्स। इन केस ऑफ अ चाइल्ड प्लेस इट बिलो द आर्मपिट एंड नॉट इन द माउथ। माउथ में नहीं डालना चाहिए बिकॉज कई बार बच्चे उसको बाइट कर जाते हैं। रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ स्लाइड। इस तरह से हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ स्लाइड हमें इसे रीड करना है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। हमें उसे नीचे से बल्ब के साथ नहीं पकड़ना है जब हम उसको रीड कर रहे हों, राइट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। A laboratory thermometer is a glass bulb type thermometer which has a range from -10 degree centigrade to 110 degree centigrade. It can measure the temperature of those objects whose temperature ranges between -10 degree centigrade and 110 degree centigrade. जिनकी ये रेंज होती है उन्हें ये मेजर करता है उनका टेम्परेचर। It cannot measure the temperature of a candle flame because the temperature of a candle flame is more than 300 degree centigrade. Moreover, the temperature on a laboratory thermometer should be read while it is placed in or inside the object. This is because as soon as we take out the thermometer from the object whose temperature is to be measured, the level of mercury begins to fall. जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट में से निकालते हैं थर्मोमीटर को जिसका हमने मेजर करना है टेम्परेचर, मर्करी का लेवल जो है वो गिरने लगता है। दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता, वेयर यू कैन रीड द टेम्परेचर इवन आफ्टर सेवरल आवर्स। हम बहुत टाइम बाद भी टेम्परेचर को देख सकते हैं दोबारा अगर हमने उसे जर्क नहीं दे दिया है, राइट। So, a laboratory thermometer does not have any constriction that can stop the drop of mercury. इनमें क्योंकि constriction नहीं होता जो mercury को drop होने से रोक सके। The laboratory thermometer should always be kept upright, not tilted. Tilted नहीं रखना है इसे। Its bulb should be surrounded by the substance of which the temperature is to be measured. Now, transfer of heat. Heat is a form of energy which flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature, right? So, the flow of heat can be compared with the flow of water. So, जो flow of heat है वो compare की जाती है flow of water से। Water always flows from a higher level to a lower level. The flow of heat will continue, वो continue रहेगा until the temperature of both the bodies become equal, okay? जब तक कि वो जो बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल से आई एम स्टार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ हॉट रॉड इज इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर, अगर एक हॉट रॉड को हम कोल्ड वाटर में डालें, सो द हीट विल फ्लो फ्रॉम द रॉड टू द वाटर अंटिल बोथ द वाटर एंड रॉड एक्वायर द सेम टेम्परेचर। तो तब तक रॉड से वाटर में हीट फ्लो होती रहेगी जब तक उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। The transfer of heat takes place in 3 different ways: conduction, convection and radiation. Heat makes things rise in temperature. A large object will take longer to rise in temperature than a small one because the heat energy gets more spread out. When something gets heated, it will expand. जब कुछ heat होता है तो वो expand होता है. This is because its particles move faster and get further apart. Now, conduction. The process by which heat is transferred from a hot object to a cold object in contact is known as conduction. Contact में आके जब heat flow होती है hot से cold की तरफ, okay, so उसे हम कहेंगे conduction. If two objects at different temperatures are placed in contact with each other, अगर दो different temperatures के objects को एक साथ contact में रखा गया है, the conduction of heat takes place. तो वहाँ पर conduction of heat होता है. The conduction of heat stops once the two objects have the same temperature. The two important conditions for heat to be conducted from one body to another bodies are: the two bodies should be in contact, उनका contact होना चाहिए एक दूसरे से.
देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट, और उनका टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए. कंडक्शन takes place in all form of matter, solid, liquid and gases. In solid, conduction is due to the vibration of particles. In gases and liquid, conduction is due to the coalescence and diffusion of particles during their random motion. When one end of an iron rod is held in the hand and other end is heated, the end held in the hand soon becomes warmer, okay, and warmer till we are unable to hold the rod. अगर हम एक एंड से रॉड को पकड़ें और वो उसको गर्म होना स्टार्ट हो जाए तो वो एंड गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से हमने पकड़ी हुई है, और तब तक गर्म और गर्म होता रहेगा जब तक कि हम अनेबल ना हो जाएं, हम उसको छोड़ देंगे. सो डू यू नो हाउ डज दिस हैपन? व्हेन वन एंड ऑफ आयरन इज हीटेड, जब एक एंड उसका हीट है, द मॉलिक्यूल्स देयर ऑब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, वहाँ से वो मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड बिगिन टू वाइब्रेट रैपिडली, और वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं रैपिडली बिकॉज हीट एक्सपैंड होती है, राइट. सो दीज मॉलिक्यूल्स इन टर्न कॉज देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट. सो ये मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को भी वाइब्रेट करते हैं. This process continues along the iron rod and energy is transferred from the hot end to the cold end of the iron rod. So there are some materials which conduct heat very easily. Materials that conduct heat easily are called conductors of heat. Metals like iron, silver, copper and gold are solid at room temperature. They are good conductors of heat. The materials that do not conduct heat easily are called poor or bad conductors of heat. Okay, poor conductors are also called insulators. Gases and liquids are poor conductors of heat. Wood and plastics are poor conductors of heat. Okay, uses of good and bad conductors of heat. क्या है good और bad conductors का use? कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये कुकिंग यूटेंसिल है, आप इसे गैस पर रखोगे तो ये हीट होगा ना. सो कैसे उसको आप होल्ड करोगे? आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. सो सच यूटेंसिल्स गेट हीटेड अप क्विकली. Food can be cooked efficiently in shorter time. The utensils are generally made of copper, brass, steel, aluminium, etc. The handles of kettles and utensils are made of bad conductors of heat such as wood, plastic, ebonite, etc. They help in holding them comfortably. तभी हम उन्हें comfortably hold कर पाते हैं. Woolen clothes are bad conductors. They are not actually warm. They do not allow heat to conduct away or to escape out and thus keep our body warm. Okay, ये हमारे अंदर से हीट को बाहर नहीं आने देते, इसीलिए हमारी बॉडी वार्म रहती है. Building materials like bricks, asbestos and mud and grass are bad conductor of heat. They do not permit heat and cold to pass through the walls of brick. They keep the house warm in winter and cool in summer. Roof sheds are made of asbestos for the same reason. Now hair and the fur of animals are bad conductors of heat. They protect them from cold. Vehicles carrying inflammable materials such as petrol are covered with materials of bad conductors of heat. जिनमें इनफ्लेमेबल मटेरियल कैरी करती हैं जैसे कि पेट्रोल, उन पर भी ऐसी कोटिंग की जाती है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है. सो अदरवाइज द पेट्रोल कैन गेट हीटेड अप एंड कैच फायर. स्लैब्स ऑफ आइस, जो आइस की स्लैब्स होती हैं, आर कवर्ड विथ सॉडस्ट और गनी बैग्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मेल्टिंग बिकॉज सॉडस्ट एंड गनी बैग्स कंटेन अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. Mercury, being a good conductor of heat, is used in thermometers. Now convection. It is the process, ये एक वो process होता है by which heat is transmitted in liquid and gases by the actual movement of the heated particles. Actual movement जब heated particles की होती है तो heat transmitted हो जाती है किसमें? Liquid और gases में.
फॉर एग्जाम्पल अ हीटर वार्म्स द एयर अराउंड इट, एक हीटर चलाते हैं तो वो हमारे आसपास की एयर को वार्म करता है. As the air becomes hot, it expands and the hot air begins lighter rises up. As the hot air rises up, जैसे ही hot air ऊपर उठती है, it is replaced by cooler air. So ये cooler air को replace कर देती है. Then the cooler air near the heater also gets warmed and rises up. फिर जो cooler air होती है वो heater के पास आती है और फिर वो भी rise up हो जाती है. Right? So this movement of heated air always from a hot object along with the flow of cool air towards the hot object is called convection current. So ये जो movement है heated air का away from a hot object along with the flow of cool air towards hot air heater से rise up होती है, cool air heater के पास आती है और फिर वो भी warm होके rise up होती है. So जो ये cycle चलती है इसको कहते हैं convection current. In this way, air is moved to all parts of a room. Convection can also lead to circulation in a liquid. Okay, liquid में भी ये circulation होता है. As in the heating of a pot of water over a flame, heated water expand होता है and becomes less dense. Cooler, more dense water near the surface descends and pattern of circulation can be formed. Let us take a vessel containing water and put it on a flame. इसे फ्लेम पर रखें. The water at the bottom of the vessels become hot. जो नीचे का वाटर होगा वो गर्म हो जाएगा. Since hot water is lighter than cold water, hot water cold water से light होता है तो ये rise up हो जाता है. The cold water on the top, जब फिर जो top पर cold water है moves to the bottom to take the place of the hot water. वो नीचे जाता है hot water का place लेने के लिए. It thus gets heated, ये भी heat होता है. The process continues till the whole water in the vessels get heated. So ये पूरा process चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी जो vessel में है वो गर्म हो जाता है. Now, applications of convections. We make use of convections in our daily life in many ways. In houses, the air we breathe out is warmer and hence lighter. जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो वार्मर है और लाइटर है. इट राइजेज अप एंड गोज आउट फ्रॉम वेंटिलेटर्स से बाहर जाती है. दैट इज वाई वेंटिलेटर्स आर यूजुअली प्लेस्ड नियर द सीलिंग. रूम हीटर्स आर प्लेस्ड एट द लोअर लेवल टू वार्म अप द रूम इवनली. एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड एट अ हायर लेवल फॉर कूलिंग अ रूम इफेक्टिवली. Convections currents in the atmosphere bring about changes in the weather. The people in the coastal areas experience an interesting phenomena due to convection currents. Now, during the day, the land heats up faster than the sea. Land ज़्यादा जल्दी से heat हो जाती है comparative to sea. The air above the land becomes hot and rises up. Okay, so जो land के ऊपर की air है वो rise up हो जाती है hot होकर. The cool air from the sea blow towards the land. फिर जो cool air है sea के पास, sea की तरफ, वो land की तरफ जाती है to take the place of the hot air. उस hot air का place लेने के लिए जो कि heat up होकर rise हो चुकी है. This cool air from the sea is called the sea breeze. You can see here, okay, cool breeze from the sea during the day. At night, अब रात को क्या होता है? The land cools down faster than the sea. So the air above the sea is hotter than the land. अब sea के पास वाली जो हवा है वो ज़्यादा गर्म है. So this hot air above the sea rises up, वो rise हो जाती है, and the cool air above the land blows the sea to take the place of hot air. The cool air from the land is called the land breeze. Okay, so now we will learn about radiation. अब radiation क्या होता है? Both conduction and convection are the ways of transferring heat from one place to another. Okay, एक जगह से दूसरी जगह पर heat को transfer करने के लिए हम use करते हैं, which require the presence of a material medium as solid, liquid or gas. जिसको कोई material चाहिए, कोई medium चाहिए, चाहे वो solid हो, liquid हो या gas हो.
There is a third process of heat transmission which does not require a material medium, जिसे कोई material medium नहीं चाहिए. This is called radiation. Heat energy from the sun reaches the earth's surface by radiation. Okay, on standing near fire we feel hot as heat comes to us through radiation. Okay, the heat radiation from a body depends upon its temperature, the surface area, the distance between the body and the source of radiation, and the nature of the surface. A black body absorbs more heat than shining ones. So this is the solar radiation you can see here. Now application of radiation क्या होते हैं? We make use of radiation in our daily life in many ways. In summer we wear white clothes, okay, और लाइट कलर्ड क्लोथ्स. हम प्रेफर करते हैं कि हमारे क्लोथ्स वाइट हों, लाइट कलर्ड हों, बिकॉज दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल हीट एंड रिफ्लेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, thus making us comfortable. Now cooking utensils are generally highly polished. The polished surface radiates very little heat and the food cooked in it remains hot for a longer time. A teapot is brightly polished so that it radiates only a small amount of heat, thus keeping the content hot for a longer period. Electric radiators जो होते हैं, they use highly polished reflectors so that a large amount of heat produced is reflected in the room. Now hot water pipes and radiators of cars are painted black so that they radiate heat quickly. वो heat को quickly radiate करते हैं and the temperature is kept within limits. The milk van is painted white. Milk van को white paint क्यों किया जाता है? So that it absorbs only a small amount of heat from atmosphere and thus the milk is kept fresh. Big petrol reservoirs are painted white or they are polished so that they are able to reflect heat radiation from the sun and thus prevent a rise in their temperature. Now working of a thermoflask. Thermos flask कैसे work करता है? A vacuum flask or thermos flask is an insulating storage vessel. ये एक insulating storage vessel है that increases the time over which its contents remain hotter or cooler than the flask surroundings. Okay, so ये एक insulating storage vessel होता है जो उस टाइम को बढ़ाता है जिसमें ये ठंडा भी ज़्यादा देर रहता है और गर्म भी ज़्यादा देर रहता है. Okay, it was invented by Sir James Dewar in 1892. The vacuum flask consists of two flasks placed one within the other and joined at the neck. इसमें दो फ्लास्क होते हैं जो एक दूसरे से के ऊपर प्लेस किए जाते हैं और फिर नेक से जॉइन होते हैं. The gap between the two flasks is partially evacuated of air, creating a near vacuum which prevent heat transfer by conduction or convection. Okay, so most heat transfer occurs through the neck and opening of the flask. जो भी heat transfer होती है वो neck या opening पर होती है. Where there is no vacuum, जहाँ पर कोई vacuum नहीं है. Vacuum flasks are usually made of metal, glass, foam or plastic and have their openings stoppered with cork or polythene plastic. Okay, vacuum flasks are often used as insulating shipping containers. So vacuum flasks are used, वो use किए जाते हैं to maintain their contents at a temperature higher or lower than ambient temperature. ओके, सो हमें अगर अपने एम्बिएंट टेम्परेचर से हायर या लोअर टेम्परेचर का कुछ भी पानी पीना है या कोई भी मिल्क पीना है तो हम उसे वैक्यूम फ्लास्क में रखते हैं. डोमेस्टिकली एंड इन द फूड इंडस्ट्री दे आर ऑफन यूज्ड टू कीप फूड एंड ड्रिंक ईदर कोल्ड और हॉट. A typical domestic vacuum flask will keep liquid cool for about 24 hours and warm for up to 8 hours. Some vacuum flasks include 1 or 2 fitted cups, okay, for ease of use with beverages, especially during travel or picnics. Like this, okay, this is the thermos or vacuum flask. So children,
Now we are done with the reading and here are the new words. Conduction, transfer of heat through a substance. Convection, transfer of heat by the upward movement of heated and less dense medium. Radiation, transfer of heat from a hotter body to colder one without heating the medium. कोई medium नहीं चाहिए हमें radiation के लिए. Thermometer is a device used to measure temperature. Insulator, poor conductor of heat. Heat, a form of energy. Temperature, the degree of hotness or coldness of a given body. So, now let's wrap up this chapter with some important points. Heat is a form of energy that transfers from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. The hotness or coldness of a body is termed as its temperature. The Celsius scale and the Fahrenheit scale are the most widely used scales to measure temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. A glass bulb thermometer has mercury that rises in the tube with the rise of temperature. A digital thermometer has a circuit that shows the temperature in digits. The temperature of human body is measured with a clinical thermometer that shows temperature from 35 degrees centigrade to 42 degrees centigrade. The human body temperature is 37 degrees centigrade. Now we will do the exercises. So question number 1 is tick the correct option. The marking on the stem of a laboratory thermometer is from minus 10 degrees centigrade to 110 degrees centigrade. Liquid and gases are heated by the process of liquid or gases convections. Okay. Which of the following process does not require a material medium for the transfer of heat? This is radiation. A solid transfers heat to another solid in contact with it by the process of conduction. On the Kelvin scale, the steam point is equal to 373 K. On the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree. Which of the following is a poor conductor of heat? Iron, silver, copper. Air is the poor conductor of heat. So children, now these questions you are going to do yourself. Exercise B, state whether true or false. Point 1 is all hot bodies do not radiate energy. This is false. A thermoflask consists of a single walled vessel of glass. No, it consists double walled. On a Fahrenheit scale, the lower marking is 32 degree Fahrenheit. This is true. In a solid, heat transfer by the process of convection. No, this is false. And heat is not a form of energy. This is also false. So children, these three you are going to do yourself. Exercise C is fill in the blanks with the suitable words to complete the statement. Heat energy from the sun reaches the earth's surface by radiations. Radiation carries heat in the form of waves through space. Heat is a form of energy. Convection current does not take place in solids. The average human body temperature is 37 degree centigrade. So children, these all you will do yourself. So I hope that you have understood this chapter and kindly read it again thoroughly so you can give the answer to all these questions. Thanks for watching. We will meet soon with the next chapter. God bless.